Simply Shopaholic. My name is Suhani and I post videos on hauls, beauty and even vlogs. और आज का वीडियो है vlog. So this is a vlog on a trip with my friends to Statue of Unity. So ट्रिप काफ़ी एक्साइटिंग था एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया, दूसरों का पता नहीं, बट आई एन्जॉयड इट थ्रू आउट. एंड इस वीडियो में मैंने व्लॉग किया है डे 1 का एंड डे 2 व्लॉग वुड बी कमिंग ऑन द नेक्स्ट वीकेंड. सो ये रहा उसका पोस्टर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट बिकॉज वो मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगा एज़ कम्पेयर टू डे 1 पर्सनली. बाकी तो एक्साइटिंग तो पूरा ट्रिप ही था बट डे 2 वॉज क्वाइट एक्साइटिंग. ऑल्सो मैं डिटेल्स होटल की एंड जो भी प्लेसेस हमने विजिट किया उन सब की मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. और ऑनलाइन बुकिंग हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऐप से ही किया था, सो उसकी भी लिंक मैं मेंशन कर दूंगी सो दैट इट गेट्स ईजी फॉर यू ऑल. और तो क्या बताना था, हाँ व्लॉग वाला व्लॉग नहीं हो पाया. आई एम सो सॉरी गाइज, क्योंकि एक के बाद एक एक्टिविटीज़ इतनी पाइलअप हो चुकी थी कि हम लोग यहाँ से वहाँ रश कर रहे थे. खाने का भी टाइम नहीं था, बहुत फटाफट खाया था. सो उस सिचुएशन में मैं कम्प्लीटली व्लॉग नहीं कर पाई, बट मैंने अच्छे अच्छे क्लिप्स लिए हैं एंड साथ में ही ऐसे इंटरेक्ट करती जाऊंगी सो दैट आप लोगों को भी पता चले कि हमने कैसे ये डे प्लान किया था एंड हाउ इंटरेस्टिंग इट वाज. सो अभी बहुत बातें हो गई है, लेट्स बिगिन द वीडियो. धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही, हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी. So we are traveling through Shatabdi train which was at 7:55 am and will reach Kevadia station at 10:45 am. शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में. होटल पहुंचने के बाद मैं होटल का इनर व्यू और रूम का व्यू नहीं ले पाई थी बिकॉज क्रूज़ का टाइमिंग हो चुका था. सो हम लोग फटाफट से एकता क्रूज़ पहुंचे एंड एकता क्रूज़ से हम लोग जाने वाले थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. तो अभी डायरेक्टली मैंने क्रूज़ से व्लॉग स्टार्ट किया है. होटल का व्यू मैं आपको रात को दिखाऊंगी. On the way to enjoy cruise. View and here we have the cruise and here people are clicking pics. So now I'll be clicking the inner view. So let's go inside. तो अभी हम राजस्थानी डांस देखेंगे. Then after we clicked pics and had some fun. सबको पता ही है स्टैच्यू. What is this? स्टैच्यू. So finally at Statue of Unity and here Kriya posing with mask on. So we have completed the exhibition almost and अभी हम लोग जाएंगे viewing gallery visit करने which is almost at a height of about 200 feet. So बहुत अच्छा view देखने को मिलता है वहाँ से. So let's see. This is how it is. So this was a short glimpse about Statue of Unity and viewing gallery. और इसके बाद हम लोग लंच करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल गो टू जंगल सफारी. Hunger is real. You can see in Gaurav's eyes. अच्छा आ रहा है. बहुत भूखा है ये बच्चा. So yummy.
ये आ गया बस स्टॉप और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बस में बैठ के हम जाएंगे जंगल सफारी। Now you can feel the real adventure. ओह बालिका है। इसने लेट किया। वो लकड़ा है भगवान, लकड़ा है वो। ये तो आता हो तो मैं तो घर पे पकड़ के लेके चला जाऊँ। So now we are going to visit aviary which was beautifully made and वहाँ की birds chirping तो आप खुद ही सुन लो कितना बढ़िया। और रील स्टार्ट है। Common crane. क्रिया को इसमें so she's trying to go near this, what is his name, Alexandrine, so let's go for a ride. Yeah. You can see Saurus crane here. See, this is peacock, there is Saurus crane on the top, and now she will make you visit enter aviary. She will describe each and Of course. yeah, then start. These are peacocks. These are peacocks, okay. You can see one peacock here, right here. What is this? Can you just tell me? This is Dalmatian pelican. Okay. How cute are they? चल अपनी आ गई यहाँ देख जा रही है। बेचारी क्रिया डर गई ऑलमोस्ट। Look at the way she is walking after a very tired day. Woo! Gaurav is making a reel. सो गाइज वी फाइनली कंप्लीटेड जंगल सफारी। सो अभी हम लोग क्रूज में बैठ के जाएंगे श्रेष्ठा भवन। सुबह भी हम लोग श्रेष्ठा भवन से ही क्रूज में बैठे थे। सो इफ़ यू गाइज वांट टू ट्रैवल थ्रू क्रूज तो आप लोगों को श्रेष्ठा भवन पहुंचना पड़ेगा और वहाँ से आप क्रूज में बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। So we are back to cruise. Now let's see what all fun we have inside. दैट वॉज ऑल अबाउट द फन वी हैड इन क्रूज। अभी हम लोग होटल जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, फ्रेशन अप होंगे एंड वी विल हैव डिनर। So let's see how the room is. Muskan is getting ready. पे थोड़ा सा सामान messed up है but ignore it guys. So here we have a good view. और मॉर्निंग में व्यू कुछ ऐसा दिखता है बालकनी से। Everyone was literally exhausted और सबको भूख भी लगी हुई थी क्योंकि सुबह प्रॉपर लंच नहीं हो पाया था। So yeah. We completed our dinner and I would like to end this video here itself because after that we played cards. मैंने वो record नहीं किया था।
सो मैं यहीं पे एंड करती हूँ वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब. So I'll see you guys in the next weekend with a new vlog that is on part 2, that is on day 2, sorry. So till then, take care of yourself and stay tuned. Bye.